Hello, Assalamualaikum everyone. Welcome to the third podcast of HamSukhan. मैं Faiz Gilani, मेरे साथ Safa Bey, and this time we're going to talk about something that is not very common in Pakistan, but we believe should needs to be popularized. We're going to talk about cycling and how cities can actually make itself cycle friendly. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या वो खसूसियात हैं जिसकी वजह से एक शहर साइकिलिंग के लिए सही होगा, साइकिलिंग होगी या नहीं। फिर हम उसके बाद पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान में क्या ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से वो साइकिलिंग फ्रेंडली नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर आपको पता है पाकिस्तान साइकिलिंग फ्रेंडली नहीं है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हमें शहर को अपने चेंज करना है और उसको साइकिलिंग फ्रेंडली करना है, व्हाट changes are needed in order to make it more cycling friendly and actually make people come out there. इसके साथ साथ हम चलते हुए हम दूसरे शहरों की भी बात करेंगे. You'll regularly hear Bogota in our whole conversation because that's fairly prevalent and when you compare the two cities and the whole scale and all, Bogota would be very relevant. तो ये सब करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं पूछूंगा सफा, आप बताओ बचपन में साइकिलिंग की हो कि या अभी भी करते हो? So do you For cycle? sure. Why did you stop? If you stopped, what are your plans? क्या है? So I used to cycle a lot growing up. I grew up in Saudi Arabia, by the way. तो हमारी बड़ी safe सी neighborhood थी जहाँ बच्चे अगर रात को भी फिर रहे होते थे, everyone knew it's fine because there was a lot of eyes on the streets. Like we trusted the whole neighborhood. तो उसकी वजह से और क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह क्योंकि neighborhood थी closed, तो there मतलब इतनी गाड़ियाँ वगैरह का सीन नहीं था. तो we would cycle a lot. I grew up cycling बहुत ज़्यादा. पाकिस्तान आके obviously that stopped. लेकिन फिर recently during COVID because मैं घर पे बैठ बैठ के काफी तंग आ गई थी. I was like यार मैंने साइकिल स्टार्ट करनी है. So I found a group online जहाँ which would be women friendly ताकि my parents would be okay with it क्योंकि obviously वरना तो सीन ही नहीं है. So I found a group of girls that cycle in Islamabad and I joined them and I started going every single weekend. मैं हर हफ्ते इस्लामाबाद में साइकिलिंग करने जाती थी और 20, 30, 40 किलोमीटर की हम साइकिल्स 3-4 घंटे कर आते थे. लेकिन over time I started losing that habit as well because I realized our roads are so not cycling friendly. Harassment कितने issues होते हैं, generally safety कितने issues होते हैं. कोई भी गाड़ी आपको आराम से मार के जा सकती है और किसी को परवाही नहीं होनी. Like it did not feel like a pleasant experience cycling, which is very unfortunate because पूरी दुनिया में cycling एक बहुत positive चीज experience माना जाता है, but not in Pakistan unfortunately. So yeah, what about you? मेरा केस काफी फर्क है. सो इन आवर टीनेज years हम लोगों ने सारे भाइयों ने पैसे मिलकर इकट्ठे किए एंड वी वेंट एंड वी बॉट आवर फर्स्ट साइकिल्स. हम उससे पहले स्कूटी चलाते थे घर पे. सो व्हेन वी गॉट द साइकिल्स, फिर हमने घर पे चलानी शुरू की एंड सडनली यू रियलाइज कि घर में 4-5 चक्कर लगाने से आपको मजा नहीं आता बिकॉज यू आर जस्ट गोइंग अराउंड इन So why सर्कल्स. didn't you cycle outside? Why So did your that parents? I'm bringing it on to that. So then we started asking our mom, कि क्या हम बाहर चला लें? And my mom, I don't blame her at all because her decision made absolute sense at that time. But she's like, you can't cycle outside. It's not safe. गाड़ियाँ बड़ी स्पीड से जाती हैं, एक्सीडेंट बहुत होते हैं और सेफ्टी का भी तब बड़ा इशू होता था बिकॉज हम बच्चे बच्चे से चीज़ लाइक सिक्योरिटी भी ठीक नहीं है. सो इन दी एंड वी वुड बी फोर्स्ड टू साइकिल विद इन आवर हाउसेज. और उससे क्या होता था, वक्त के साथ साथ हमारी साइकिल जो थी जो रोज चलती थी वो फिर स्टोर में चली गई और फिर वो पड़ी रहती थी. फिर टायर पंक्चर हो गया, फ्लैट हो गया एंड देन स्लोली वी one day you realize that you have completely stopped at that. And you outgrew your cycle as well, yes, तो वो हो which जाए is the story a lot of us relate to. साइकिल तो टीनेज एज में नहीं थी, हम बड़े हो गए चलाई नहीं तो उसके बाद फिर खरीदी नहीं. हाउएवर व्हेन आई केम हियर लंदन आके स्पेशली, तो उसके बाद क्या हुआ, यू विल फाइंड साइकिल्स जो आप एक्सटेंड कर सकते हो, जस्ट गो एनीवेयर एंड पुट इट इन द नेक्स्ट साइकिल स्टैंड. एंड सडनली आई फाउंड दैट पैशन फिर से. जैसे तुमने कोविड में ढूंढा मुझे. London किसी जगह में ना I had the fortune of visiting London once a few years ago. And उधर आपका दिल करता है साइकिलिंग का. Like अगर हाइड पार्क में जाओ या कहीं भी जाओ, cycles are easily accessible, the roads are friendly, उधर culture भी है. If you're cycling, people will be like, oh that's cool. इधर आप करोगे, people will be like, ये कौन चवल साइकिल कर रहा है. अच्छा, तो हाइड पार्क से ज्यादा मेरे ख्याल से हमें पहले बात करनी चाहिए व्हाट मेक्स अ सिटी इन इट्स. जैसे तुमने बात की लंदन की साइकिल के लिहाज से काफी फ्रेंडली लग रहा है. सो वी नीड टू एक्चुअली कंसीडर व्हाट आर द एक्चुअल एस्पेक्ट्स दैट मेक अ सिटी बाइक्स फ्रेंडली एंड ऑन. तो सबसे पहले तो बात आती है हमारी अर्बन प्लानिंग कैसी है. डू वी एक्चुअली हैव अ सेपरेट बाइक साइकिल लेन और नॉट? और वैसे तो मैंने पाकिस्तान में खैर देखी नहीं. आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट पाकिस्तान लेटर ऑन. लेट्स जस्ट लाइक बात करते हैं कि
साइकिलिंग में के लिए क्या शहर के लिए जरूरी है. सो यू विल हैव साइकिल स्टैंड्स, फिर उसके अलावा सेपरेट बाइक लेन्स होती हैं. फिर उसके अलावा यू विल हैव companies, Santander यहाँ पर, they would have their bicycles. You just tap in with your card and they'll just charge you like £1, और वो फिर आप उससे लेकर ना आप कहीं भी चले जाते हो, नेक्स्ट स्टॉप पे छोड़ दो. तो तो साइकिल लेन्स तो अगर इधर भी हाँ, है तो व्हाई डोंट दे वर्क? सो यही बात आती है जब आप पाकिस्तान में देखो. ये वही वाला हिसाब है. अगर आपने एक सेपरेट हैवी ट्रैफिक व्हीकल के लिए रखी हुई है लेन, तो उसमें भी आप नोटिस करोगे उधर भी बाइक जा रहा होगा, उधर गाड़ी भी जा रही होगी. सेपरेट लेन्स बना भी लें तो लोग नहीं उसको फॉलो कर रहे होते, वहां Exactly. You पर make a cycle एनफोर्समेंट. lane here, the car riders will automatically think, oh, another lane, और वो उधर ही फंस जाएंगे. और हम अभी रिसेंटली भी बात कर रहे थे इस एपिसोड को शूट करने से पहले कि यार इधर तो साइड वॉक्स भी, गाड़ियां होती है साइड वॉक और मोटरसाइकिल वगैरह होती है. तो तो उसी में साइकिल लेन तो दूर की बात है. और अगर आप सोचो ना, हम जब केस स्टडीज पढ़ते हैं कि साइकिलिंग किस शहर में प्रेवलेंट है और किस में ज्यादा पॉपुलर है, तो जो जो फीचर्स पॉइंट आउट करते हैं ना, दे आर लाइक शहर कंजस्टेड हो, ठीक है, सड़कें तंग हो, पार्किंग स्पेसेस ना हो, ठीक है. इस लिहाज से आपको साइकिलिंग की बड़ी जरूरत पड़ती है, बिकॉज आप ट्रैफिक अवॉइड कर सकते हो, आप अपनी हेल्थ So you're देख सकते saying हो. cities like the हाँ, ones in Pakistan are ideal तो for वही, cycling cities? या तो वही आप देखो ना कि पाकिस्तान हैज एवरीथिंग. वी इवन टॉक अबाउट वेदर कंडीशंस. यहाँ पे यूरोप में अक्सर ठंड पड़ी बहुत होती है, बर्फ पड़ जाती है, तो दैट्स नॉट इवन सूटेबल. वेयरएज इन पाकिस्तान इन मोस्ट पीरियड्स, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जब वो बहुत गर्मी हो जाए यहाँ पे धुंध आ जाए, तो जनरली यू कैन साइकिल. तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स देख कर हमें लगेगा कि पाकिस्तान जो है इज आइडियल फॉर साइकिलिंग. हाउएवर साइकिलिंग नहीं होती यहाँ पर, ठीक है. एंड दैट्स वे वी टॉक अबाउट पाकिस्तान के इस लिहाज से इश्यूज. तो सफा ने सबसे पहले बोला कि पेडेस्ट्रियंस के लिए भी जगह नहीं होती है, और साइड वॉक पे आप नोटिस करें. The way cities are designed in Pakistan, they're, let's make this idea clear. Okay, they're designed to cater to people who have cars. Okay, it's Yes. not designed to cater for people who are walking. They're not designed for pedestrians or people who have cycles. The city design in every aspect is to cater to just cars. तो उसके लिहाज से फिर हम बाकी चीजें डिस्कस करते आप हैं. ये नोटिस करें, कभी सड़क एक्सटेंड करनी होगी तो वो क्या करते हैं रादर कि वो साइड वॉक छोटी करते रहते हैं. एंड में वो एक फॉर्मेलिटी रह जाती है विद जस्ट वन, और उसके आप मुश्किल से चल सकते हो. ग्रीन बेल्ट्स रिमूव होती जा रही, कम होती जा रही है, एंड सडनली योर डिपेंडेंस ऑन कार्स बहुत ज्यादा. एंड दैट इज फेयरली, बहुत ज्यादा. और दैट इज फेयरली इंट्रीगिंग कंसिडरिंग द फैक्ट कि पाकिस्तान में सिर्फ 9% ऑफ हाउस होल्ड्स ओन अ कार. मतलब 9% ऑफ द पॉपुलर, Exactly. 9% Yes. ऑफ द हाउस होल्ड्स के लिए आपने पूरे शहर को सड़कों का वो बना दिया. Which वी is very आर, unfair. we are not saying that roads are not necessary at all. मतलब transportation is needed and all, but however there's a balance required. अगर आप इस तरह के शहर बना लोगे जिसमें आप सिर्फ बाईसाइकिल्स वगैरह को सिर्फ कार्स वगैरह को रखोगे, तो we also need to remember that Pakistan imports oil and it ends up being a big constraint on the budget as well. तो अगर हम साइकिलिंग प्रमोट करते हैं, we're actually cutting down our national expenditure as well, क्योंकि लोग जब साइकिलिंग कॉमनैलिटी हो जाएगी, वो ये नहीं कि अक्सर पाकिस्तान में होता है जगह भी बहुत पास होती है, आपने ग्रोसरी करनी है वगैरह, you just grab a bike, you just go there within 5 minutes. और Especially a city like Islamabad, for example, because I live हाँ here. हाँ Like आप sectors, आप F11 से F6 जाना चाहें, you can easily go on a bike. It's not even an issue. Sector के within तो और भी आसान है, obviously, but there's no reason for this not to be happening. तो बात वही है. पाकिस्तान में इस्लामाबाद इन कंपैरिजन टू लाहौर, इस्लामाबाद बहुत बेहतर है इस लिहाज से. लेकिन पाकिस्तान में सफर, डू यू थिंक कि अगर हम सिर्फ खाली बाईसाइकिल लेन्स बना लें तो क्या पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे? नहीं, because there is a huge behavioral change needed as well. It's you, अगर आप सिर्फ बाइसिकल लेन बना लें, again जैसे हमने बात की थी, उधर गाड़ी ही चलनी है. हाँ, और Most probably. उसके अलावा हमारे मसले बहुत हैं. हम बाईसाइकिलिंग को ना गुर्बत से एसोसिएट करते हैं. आई रिमेम्बर मेरे कारी साहब के पास भी होती थी साइकिल, और मेरे घर पे माली आते थे, उनके पास भी साइकिल होती थी. एंड दे एंडेड अप गोइंग इवेंचुअली बाइंग मोटर बाइक, ठीक है. एंड दैट वाज अ बिग जंप फॉर देम. उन्होंने काफी पैसे इकट्ठे किए थे, बट लेटर ऑन दे विल टेल कि यार जो सेहत मेरी साइकिल के वक्त थी वो अब नहीं रही. आई वुड साइकिल all Course. across the city and all, it doesn't feel the We same. all know the benefits हाँ, of cycling. yeah. एक तो mental health के लिए, physical health के लिए, generally, you get to experience nature a bit. You can also, it's also a way of disconnecting from your phones and things like this. Like,
if you're cycling, आपका commute भी थोड़ा लंबा होगा. It's a good activity in general for us, especially nowadays, to हाँ, just take a break and just enjoy the city. हाँ. और इसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो क्लाइमेट चेंज इज इम्पैक्टिंग पाकिस्तान काफी, जिसमें फ्लड्स होते हैं वगैरह, Yeah, और for पोल्यूशन जो sure. है वो मोटर बाइक वगैरह से होती है, और पाकिस्तान लाहौर स्पेशली की एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब हो गई है। तो 100%. इस तरह माइनर चेंजेस है ना, पाकिस्तान बहुत बेहतर हो सकता है। वेराज इफ यू लुक इन यूरोप वगैरह, जिस तरह सफा ने पहले बोला कि अगर आप साइकिल चला रहे हो तो सडनली यूल बी लाइक, ओ दैट गाय इज सो कूल, यूजुअली दे विल हैव अ स्मॉल पूडल, वो आगे बैठा होगा एंड दे विद देयर बैकपैक्स विद हाँ, कूल उधर, हेलमेट। cycling is an हाँ, aesthetic. हाँ, There it's like, it's you a have, joke. yeah, you have designated shop with all these cool accessories and all, और फिर उसमें क्या होता है, you'll be like, oh यार तो बहुत cool लग रहे हैं, and suddenly you हाँ, want to be like them, ठीक है। And that is that one change, जैसे नॉर्वे वगैरह ने भी, they want to reduce their carbon footprint, and for that what they're doing is actually they're promoting cycling to an extent कि उनका जो total carbon emissions है वो ज्यादा कम हो जाए, and we are the ones who are actually suffering from climate change, तो हमें उस लिहाज से उस पर देखना चाहिए। और हमें, the day we realize that cycling is not just for the poor but rather is it's a way of life, active mode of transportation है, that's when you actually realize कि cycling itself जो है हमें यहाँ पे common करने की जरूरत है। But that being said, I think हमें बगोटा की I बात want करनी to चाहिए। emphasize one of the points that you mentioned, कि Pakistan, just to understand how the gravity of the situation. Pakistan में 9% of the households have access to a car. अगर आप population wise breakdown करो, उसका percentage और भी कम होगा. ठीक है, proportionally, a very small proportion of the population has a car to use. Yeah, ठीक है. It is actually ridiculous if you think about it to create cities that cater only for those people when in reality most people can afford a cycle. yeah, तो जिस तरीके से आप सिटी प्लान कर रहे हो, you're actually excluding majority of the population. We're not even talking about a significant chunk. We're talking about a majority. And then वो अगर हम बात करें तो women का जिस तरीके से यूज होता है साइकिल का, cars का, etc. उसमें बात और भी समझ आ जाती है. But this is just something really important to understand कि यार it's something that it's an urgent issue. Like we really need to think about it. It's not just something कि हम दोनों बस इधर बैठ के बात कर रहे हैं. It's something that the way cities are being planned right now, it needs to be part of the discourse. और इस पे एक और बड़ी जरूरी चीज है, लोग हमें सुन के कहेंगे नहीं यार ट्रैफिक तो बहुत होती है, ज्यादा फैक्ट होंगे वगैरह। हाँ, एक और रोड बना. द फैक्ट इज हमारे पास वॉकेबल सिटीज नहीं, जिसकी वजह से हमारी ट्रैफिक ज्यादा होती है। अगर आपने घर से ब्रेड भी लेने जाना है तो आपको गाड़ी निकाल के जाना पड़ेगा, एंड सडनली एंड एवरीवन's अगेन आउट ऑन द जो रोड। लॉजिक होती है ना हाँ, पॉलिटिशियंस की हाँ, या गवर्नमेंट हाँ, ऑफिशियल्स की कि यार हमें कोर लेन बना रहे हैं हाँ, ताकि ट्रैफिक तो थोड़ी खुल जाए, मसला हल हो जाए. इट्स एक्चुअली नॉट ट्रू. रिसर्च हैज प्रूवन दिस कि आप कोर लेन लगाओगे, you're gonna get more traffic. yeah, तो It's और an वो, induced demand. एंड अनदर थिंग इज कि गवर्नमेंट जनरली इन्वेस्ट इन विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको नजर आएगा ये, इस पे भी बहुत आर्टिकल्स है कि एक नई लेन आ गई है या हमने नया फ्लाईओवर बना दिया है। हाँ, थोड़ा द थिंग, फेमस भी कर सकते हो ना आप. हाँ, द थिंग इज दैट इज टू गेन पॉपुलैरिटी दैट वी डिड समथिंग, वेयर अगर आप या सिटी को साइकिल के हिसाब से बना दें, मे बी हैव लाइक अ हाँ, I साइड feel like वॉक if a वगैरह। politician says we made a cycle lane and everyone will be like, okay, cool. No पीएमएल one cares. पीएमएल क्यू करे ना तो समझ भी आती है, उनके साइकिल इंतखाबी निशान Okay, है। side. हाँ, Yeah. उनको तो कुछ But they करना चाहिए didn't था do इसके anything. ऊपर। हाँ, लेकिन सही बात है. That's not मूविंग ऑन, CCTV. आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट अदर सिटीज। ये लगता है कि यार ऐसे ही बोल रहे हैं, वी डोंट रियली When we हैव। look at Pakistan and we say कि यार cycling city होनी चाहिए ये वो, तो obviously even me and Faiz when we think about it, तो we're like यार वैसे मुश्किल है यार, like वो attitude change करना, infrastructure भी साथ साथ change करना, government officials को on board लाना, it seems almost impossible. And फिर हम सोचते हैं कि यार हमारी cities इतनी densely populated हैं और इधर बड़ा like गुर्बत भी है और समझ भी नहीं है लोगों की को. And then you read about a city like I would like to Bogota. start You're first. like, I would like to start here. I okay, would like to please, start. please, please. So when we started off with this आइडिया, तो मसला क्या आया था, जो भी आर्टिकल ढूंढते थे ना इनिशियली, दैट वुड बी अबाउट डेनमार्क, नॉर्वे, लंदन, एंड सडनली आई Yeah. वेंट टू एन conference held at LSE London School of Economics, and they started talking about Bogota. Bogota मेरी डिग्री में बहुत दफा आया था, it's about because they have loads of literature over there, and suddenly I'm like, oh, Colombia का capital in cycling, and that's when we got to know about Bogota. And आपको यूजुअली होता है यार ये तो मीर मुल्क की बात कर रहा है, तो वो तो उनके बजट फर्क होता है वगैरह,
बगोटा इज एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस कि बगोटा ने जिस तरह अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है ना, हमें भी अगर उस मॉडल पे कर लें तो कमाल हो जाएगा. सफा, वुड यू लाइक टू स्टार्ट अबाउट हाउ दे इम्प्लीमेंटेड द चेंज, के शुरू कहाँ से हुआ था? Yeah, for sure. Because it's a very interesting kahani. So if you've stuck around for this part, I would highly recommend you search up about Bogota. It's a genuinely such an inspirational story. So Bogota का क्या scene है? Just to give you some perspective, Bogota का population है 11 million or maybe 12 million right now. ठीक है? This is the population of Bogota. Lahore की, just to give you some perspective, की है about 13 million, maybe 14 million right now. Islamabad की है 1 million. ठीक है? Bogota was known as the most congested city in the world until they started introducing cycling. And now, at this point, it's known as the cycling capital of Latin America. How they started was because it was such a congested city. उन्होंने सोचा कि यार, the citizens got together and they decided we need to start introducing cycling as a normal way of commuting. So they decided कि us, just to start off, कि every single Sunday we're gonna have this event, like a cycling Sunday of sorts. It's called Cyclovia, I think, Yeah. something like. So they're gonna get together and उस दिन जो मेजर रोड नेटवर्क्स हैं वो बंद करा देंगे और हम सिर्फ साइकिल किया करेंगे 7 a.m. till 2 p.m. No cars allowed, only people are gonna cycle. And उस 11 million के शहर में 1 million people, now I think up at this point this is the numbers they are hitting. 1 million people get out on the streets every single Sunday just to cycle. You're not allowed to have a car. You can walk or cycle. And this happened, I don't know how many years ago, but this is how it started. So the thing is, हम usually immediate results बनाते हैं, we're waiting for someone else to take charge. लेकिन I'm noticed that their struggle started in 1970. That's when people got together. Oh yeah, they started almost 50 years ago. Yeah, so they started off with a bunch of people going out together and they're like, यार हम cycling कर रहे हैं, ठीक है? Eventually it became a part of their national interest वगैरह, और एक मेयर आया, उसने lanes बनाई, फिर उसका second tenure उसने अच्छा, this is the thing now, this is what you have to understand. Citizens के अंदर एक तो शौक था, there was a movement within the citizens, but then the mayor came and she's a she implemented it to the best of her abilities. She's like, I'm gonna make this happen, and then she did make it happen. And the thing is, even when she went out of power, the next mayor that came in, the person is like, I'm going to continue with this legacy, and now they actually look forward to increasing bike lanes. ये नहीं होता कि एक tenure खत्म हुआ and then they're like, okay, we're going to discontinue this policy. और अब उधर national holidays होती हैं जहाँ पर लोग सिर्फ बाहर cycling करने आते हैं. Imagine how cool that sounds. आप बाहर निकलो and there's no horns or honking. Now you just see chains being. Oh my God, it sounds like heaven, honestly. Families, and you know, when we're talking about such instances, हमें सोचना चाहिए कि हम में भी वो पावर है कि अगर हम कोशिश करें, शुरू करें, get together. And moving on from Bogota, अब usually बात करते हैं कि about how cycling in itself is necessary, लेकिन हमारे ख्याल से ख़वातीन को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है. There's ample literature on the fact that women carry out more daily go out of their houses to run errands and other things because they're the primary caregivers of their households. They also don't have as easy access to cars as men. That adds to the dilemma. मर्दों के पास गाड़ी होती है, वो ऑफिस जाते हैं, वापस जाते हैं. ख़वातीन के पास अक्सर घर पे नहीं होती हैं. They have to rely on public. उनके पास गाड़ी नहीं होती, अक्सर they don't know how to drive. अक्सर थोड़ा social norm भी होता है कि यार एक तो बाइक, मोटर बाइक से वो यूज ही नहीं करती. लाइक इधर तो नॉर्म ही नहीं है. वो सब ऐड होता है उस डायलेमा को. ख़वातीन पे नहीं जा पाती and they have to rely on public transport or walking. और walk आसान नहीं है, public transport हर जगह available नहीं है, उसमें भी मसले होते हैं. And suddenly you realize that इनकी mobility है वो बहुत constrained हो गई है. And that's when we bring on other examples as well. तो हम usually बात करते हैं कि ख़वातीन को empowerment चाहिए और mobility चाहिए. So there are two major case studies जो हमने ढूंढी हैं. First one is Chain Breaking Mamas program, and that's from Istanbul. और दूसरा है Wings of Freedom, that's from Mexico City. And both of these are initiatives जहाँ पर ख़वातीन को नहीं आती थी साइकिल चलाना. And in both cases they got together. And in the Istanbul one, what happened was कि मेयर की अपनी अम्मी ने इसमें लीड भी लिया था.
And what happened is they had a program where they first taught them how to cycle, and that was in a controlled environment. एक छोटी सी जगह पर they would cycle and learn how to cycle. उनको फिर उनको सिखाया भी था साइकिल खराब हो जाए तो वो कैसे ठीक करना, वो भी बहुत ज़रूरी होती है. And later on, what later happened was उनके WhatsApp groups होते थे. They'll come out together and they'll cycle throughout the city. और करते करते they would say कि हमें freedom मिली है, we have a better connection with our son or their daughter because they would be with them all the time. और फिर उनको suddenly you realize that they have the power to go out, और वो they're not dependent upon their other members of their household to carry on these things. तो ये करते करते आपको realize होता है कि if cycling becomes a normality और popular हो जाए, so it can have advantages to a point कि हम अभी बैठ के सोच भी नहीं सकते. तो सफा तुमने कुछ ऐड करना है इससे पहले कि मैं इस एपिसोड को रैप अप करूं विद कंक्लूजन वगैरह? Wrapping up already? Oh my God. I want to talk about Bogota more. I कर love लो. that story so much. I think because I really like that story because Islamabad mein, one of our professors at LUMS, Dr. Naveed unka naam hai, he tried to implement it and it was it kind of fizzled out. उन्होंने कुछ अर्सा काफी कोशिश की, महीने में एक दफा वो संडे को साइकिलिंग संडे नाम होता था, जिन्ना एवेन्यू को बंद कराते थे and families would come and cycle. But it fizzled out and I'm not sure why, but I think it's because you need support from every level to make a societal level change. Like एक बंदा थोड़ा सा push कर सकता है, but you need. So when we were reading about Bogota, so this is what the mayor talked about. She said she said her team was so strong. And it was WhatsApp groups होते थे 500 plus people and things like this. And she said we were like the musketeers. We all were going to make this happen. Everyone was working on it from their perspective. She would say even the sweepers of the streets were part of this. Like they knew they had an integral role to play on this. So like everyone was in on the project. Everyone knew कि यार ये हमारे लिए project. This is for the citizens. It's good for us, and we're gonna fight for it. तो उसके थ्रू वो सारा like this बगोटा is में how it was. एक और भी चीज थी उधर. इनिशियली यही वाला परसेप्शन था पाकिस्तान वाला कि जो साइकिल है गरीबों की है. Yes, And उधर सेम मसला था यार, कंजेशन थी, severe किस्म की it's रोड like समझते थे. ideal, मतलब हम आइडेंटिकल हैं उस मामले में, ठीक है. And I don't know how identical we are. We cannot scientifically make that statement, but काफी चीजें similar है. Like वो social norms की भी बात है, यार cycling was looked down upon. पहले before the cycling Sunday thing, I think 0.5% of the total commutes were on cycle, which was almost insignificant. After they started regularizing this, almost 10% of their commutes are purely based on cycle. So ye change again justifies the 1970s or 80s may start where it's a like a work in progress for 40-50 years. And now it's like the capital, like people look at that case study and say, okay, this is cycling center of Latin America. And it's not just Latin America. The thing is, जब मैं LSE के conference में गया था, there were like Europeans sitting over there from Denmark together. Everyone was looking at Bogota. It's a case study for everyone. Everyone. It's not like just Latin America. I was reading about how I think उसी article में mention हुआ था कि यार Sevilla, I don't know, Sevilla. Spain का. Yeah, it was very celebrated कि ओए यार उधर cycling track है, और if you search it up तो उधर लिखा होता है oh cycling friendly city, amazing ये वो. तो it was really celebrated जब उन्होंने 18 किलोमीटर का track जब शुरू में introduce कराया था. Just to give you perspective, Bogota का cycling track is 540 kilometers long. I think it's even more now. I think ज़्यादा हो गया. But the mayor जिसकी हमने initially बात की थी, Peluso, I think उनका नाम है or something like this. She had 2 terms, and in those 2 terms, she had constructed 540 kilometers of cycling tracks that was connecting the whole city. Sirf Amir Ilaka nahi, Gharib, Amir, all of the suburbs, all of the main city areas. She introduced a network that connected everything. So people just really use that. So with that being said, I think we stressed quite a lot that cycling is a and we need to remember that change I think we stressed a lot that we all need to be part of the movement. Yeah, so उसी में बात है. आप गालियां दो कि यार ये DC नहीं करता और ये बंदा नहीं करता और ये इसको करना चाहिए यार. It was a citizen level movement and we need to be part of it. Bogota, Turkey, Mexico, all were like led by citizens. वो आगे निकले, उन्होंने कहा हमें ये चाहिए और हम कदम उठाएंगे. हमने cycles निकाली and that's how it all started. The people made it happen. The people knew
it was needed and the people enforced it. And when they got out and people पे government की भी tension है, it's not like government would suddenly be like, oh इसकी ये this is something that needs to be, but अगर लोग उनको देखेंगे कि साइकिल के साथ जा रहे हैं, फिर वो शायद उनको हो कि अच्छा यार अब तो जरूरत है, that builds the pressure upon them. So इसमें भी देखें, it's not like they waited for someone. Few people got out, more joined, and eventually a community was established. So हुआ. It was a movement. It was a Yeah, movement. it is a movement. So इस तरह करते करते even in Pakistan, I think it's needed because eventually at the end of the day, आप सबको पता है क्या क्या फायदे हैं cycling के. It's just about taking that first step, building a community, going out. Push the people around you, have conversations about this, push your mayors or DCs or whatever, include it in your mainstream discourse. And there are some people जिनका दिल होता है, but they're a bit hesitant or they don't really want to do it, or like उनको थोड़ी hesitation है. Just to add to this, जो पहला cycling Sunday था, it was called the Great Pedal Demonstration, कुछ ऐसा नाम था Bogota में. It was only 5,000 people, which is not an only thing. It's quite a lot of people. But it started off from that to 1 million and probably more. It looks only because now they're at 1 million. Now they're out there. Or 1 million, yaar, Islamabad ki abadi hai. Like that's how many people are on the streets every Sunday. They have national holidays just to cycle. Yeah, I'm going to Bogota. That's the conclusion. Bye, guys. And before we end, Safa and I agreed कि हमें हर episode के बाद एक छोटी सी activity देनी चाहिए लोगों को. Yeah, एक तो I think we should share the Bogota वाली case. वो तो case study मिलेगी. I wanted your perception कि our email address, it would be written in the comment section of our YouTube channel as well. Just write a 200 words passage or essay about how do you see Pakistan becoming a bicycle friendly country. यहाँ पे आप बगोटा के बारे में ही थोड़ी और research करके लिखें. Something that we can actually get. Choose the city you're part of and make it about that. Yeah. How do you make your city a cycling friendly city? How do you see it happen? Write it 200 to 300 words. It's not a lot. एक sitting में बैठ के आप कर सकते हो. Send it to us. We'll read it. We'll share our perspective on it. Connect करो इस बात पे. हम बड़ा मजा आता है. ईमानदारी की बात है, हम भी. So we're gonna do this in every episode. We're gonna give you guys one thing to read, one thing to write on. ताकि the conversation carries on. So do look out for that. And once you start actually writing about something, तो आपको ना एक inner उस पे thought भी constant रहता है. It's like YouTube पे video देख ली, अच्छा यार देख ली. But when you actually sit down and read about it and actually write about it, तब वो permanent memory का हिस्सा बन जाती है. And so I think on that note, it's time to end our episode. And don't forget to watch the next one or keep on paddling people. Allah Hafiz. Allah Hafiz.